Hi guys, welcome back to another video podcast of the El Clásico Football Hub. It is that time of the year when the world stops. Um, Probably this Sunday ke baad, one of us is going to be having a bad week all throughout. So big match day for both of us, and probably Xabi Alonso की coaching career का सबसे बड़ा match, not just Madrid की coaching career, but all throughout. So a lot of excitement leading up to the match. El Clasico on Sunday, something that justifies this channel's name as well. So Aditya, what are your initial feelings? So the initial feeling for this match is very jittery for me, right? Um, it's a very deciding kind of a match day. Uh, we are behind in 2 points. Doesn't matter right now. La Liga बहुत लंबा है, right? But these are the kind of matches that helps you seal the season, right? Mhm. The most important part coming into this match is that ये मैच पिछले साल के चारों मैचेस जैसा नहीं होने वाला है. That is, those matches were very one-sided. We were very dominant, even in matches 5-2, 4-0, whatever that score is coming out. Those were very one-sided match, right? In fact, Mhm. I remember going into that match where you scored the first two goals, the last match that we had, right? Mhm. Somehow I knew कि भले ही तुमने 2 goals मार दिए हैं, we are going to win, right? Mhm. Those were as one-sided match days as it could get. But Mhm. इस साल मुझे लगता है that is not the scenario. That is not going to be the case. According to me, बर्नेबाउ में अभी मड्रिड के पास जाके उनके साथ compete करना is going to be one hell of a task for Barcelona. Probably this season's up till now one of the most difficult tasks that Barcelona is going to face. So I think this is going to be a very close contest. It's not going to be a one-sided match. And yeah, Madrid led by Mbappe are going to trouble this Barcelona side. Is how I see this match turning out to be. What are your thoughts on it? सो इंटरेस्टिंग तूने पॉइंट एक मेंशन किया कि पिछले सीजन चारों क्लासिको बार्सिलोना जीती बट दिस टाइम अराउंड इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट. सो आई थिंक उससे पिछले सीजन ऐसा था कि मैड्रिड सारे क्लासिको जीती थी एंड अगले सीजन इट वाज बार्सिलोना विनिंग ऑल द क्लासिकोस. आई थिंक दिस सीजन वी कैन एक्सपेक्ट मे बी अ मिक्स ऑफ द टू सीजन्स. सो मुझे ऐसा लगता है द अपकमिंग क्लासिको आई एक्सपेक्ट like the match to be full of chances and full of goals potentially, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बार्सिलोना's attack is too strong for Madrid's defense and at the same time Barcelona's defense is too weak for Madrid's attack. So दोनों sides of the table हैं and I feel दोनों को chances मिलेंगे and at the end it will eventually come down to who takes those key chances and who shines at the big stage. There is a lot of excitement and a lot of build up leading up to the match. यमाल ने भी कुछ-कुछ बातें बोली हैं Correct. प्रेस में वो लास्ट लड़का क्लासिको से वही उसके रिलेटेड. अंदर कभी मुझे नेमार कभी मेसी दिखता है बट इन दीज मोमेंट्स मुझे उसमें वो रोनाल्डो वाला वो दिखने लगता है मैच से पहले देयर इज अ पार्टी एट बर्नेबाउ वाला एंगल दिखने लगता है बट या A lot of excitement leading up to the match. मेरे को लगता है ओवरऑल मैच का रिजल्ट कैन कम डाउन टू वेरी स्मॉल एंड माइन्यूट नुआंसेस व्हिच आर टैक्टिकल नुआंसेस. आई थिंक कुछ टैक्टिकल स्विचेस either side बार्सिलोना मैड्रिड को हेल्प कर सकते हैं immensely to win this match. बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि बार्सिलोना still has that slightly upper edge. मुझे ऐसा लगता है it will have goals but Barcelona still has that edge over Madrid. आई थिंक वी बोथ आर बीइंग कंजर्वेटिव क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैड्रिड हैज दैट एज बिकॉज इवन इफ लेट्स से फॉर अ मोमेंट इफ आई ह्यूमर लाइक योर arguments here, but the very fact that ये मैच सेंटियागो बर्नेबाउ में हो रहा है, right? That in itself changes the whole dynamic. या मुझे क्या लगता है ना मुझे ऐसा लगता है अभी तक जो मैड्रिड की मैचेस हुए हैं मैड्रिड हैज डन वेरी वेल अगेंस्ट साइड्स व्हिच आर मिड टेबल. ठीक है, उनके अगेंस्ट वो स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस दिखा है बट अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ यूवेंटस यू कैन आर्ग्यू लास्ट मैच में, अगेंस्ट द लाइक ऑफ मार्से, अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ एटलेटिको मैड्रिड जिनसे बुरी तरह हारे हम. तो थोड़ा सा व्हेन द ऑपोजिशन बिकम स्ट्रॉन्गर आई थिंक वो थोड़े लूप होल्स अभी भी दिखते हैं इन टर्म्स ऑफ
implementation of Chabi's ideas. मुझे ऐसा लगता है we are still not there. Maybe by the time second Clasico happens, it will be a different story. But then again, Barcelona की weakness है. I think this time around उनकी backline is way weaker and way less cohesive, I'll say. तो करेक्ट। उस sense में it is important to see how Xabi Alonso exploits Barcelona's weaknesses. तो मुझे लगता है वो एक बहुत की एलिमेंट है मैच का, जो मैच को काफ़ी हद तक डिसाइड भी कर सकता है, वो जो दिखा भी है, जैसे सेविया ने काफ़ी एक्सप्लोर किया है। ऑल्दो सेविया के पास कोई बहुत अच्छे प्लेयर्स नहीं है। सो आदित्य, लाइक वी वर डिस्कसिंग ऑन दिस ओनली, सो व्हाट आर द की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ बार्सिलोना गोइंग अप इनटू दिस मैच? So if I think about key weakness, I think everybody knows the key weakness, right? It's their high line. Because as we were discussing, there is that dearth of that one defender who is intelligent to maintain that high line. And high line is as strong as your weakest link, right? It's something like that. So I think highline is the one of the key weaknesses. The other is the injuries we are going through. So Barca ka attack is strong. I agree. But Barca का अटैक विदाउट रफीनिया काफी कम, अचानक बहुत अच्छा खासा लीडालिटी कम हो जाती है, राइट? सिमिलरली इन लास्ट मैच यमाल was not as switched on as you would want him to be, right? Because of course you have to give him some leeway. दो matches खेला इंजरी के बाद, right? Not even full matches अभी. So I believe Yamal is also on the path to that 24-25 version of himself. He's not there. Ferran Torres, who is your backup striker, is not there, right? He will come and it will be his first match, right? Lewandowski will not be there. So I think absence of those players is going to be a big deciding factor, compensated by the fact that Rashford is having a form of his life, right? But I still feel those injuries are going to haunt, especially if Frankie de Jong also remains out of the pitch. ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी रिपोर्ट्स आए हैं कि फ्रैंकी डियोंग को कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हैं. If he also remains out of the pitch, I think this match is going to be decided by a battle of midfield, और Frankie de Jong का ना होना, it will be a big miss out for Barcelona. He's slowly getting to be a player like Busquets कि अगर वो फील्ड पे नहीं रहे तो you can see what things are missing, but रहेगा तो he does many things, that goes unnoticed. And talking about strengths, if I talk about Barca's strength, right, I think two things. One, high line. So our high line is You our live by strength the as well. sword, you die by it. I by this one, right? So our high line is our strength as well, and not only because of the defensive part of the high line, but also because with the high line we become a very potent, lethal attacking side, right? We suffocate our opponent, right? So our strength is also high line. I'll just stop there. However, the second strength of Barca this season is Madrid has a lot to prove. That is our strength, right? They are coming with that baggage of losing out 4 matches in a row against Barcelona. फिर Yamal के statement, right? I think it can charge you up as well as it can also put that additional pressure of performing against this Barcelona side who will definitely score some goals, right? And just in case if you start to fumble against this Barcelona side, भले तुम्हारे पास अभी Rafinha नहीं हो, you have glazing form में you have Fermin Lopez, right? So this Barcelona side still have many players who can punish you hard if you kind of fumble. I think Madrid will be more cautious and Barcelona will be more would be looking to express more on the field. मुझे ऐसा लगता है. I would want to also discuss what weakness do you feel is Madrid's weakness. So I think one big weakness जो मैड्रिड की दिख रही है is the lack of cohesion in midfield. I think अभी तक I still feel Xabi has not found his proper starting 11 midfield. अभी भी वो experiment कर रहा है by putting Arda deep. कभी बेलिंगम को एज अ 8 खिलाता है, कभी एज अ 10 खिलाता है. सो आई थिंक देर आर, और ये भी क्वेश्चन है कि 3 मैन मिडफील्ड खेलना है, 4 मैन मिडफील्ड खेलना है. तो आई थिंक वो लैक ऑफ कोहेजन अभी भी है मिडफील्ड. तो लाइक यू मेंशन, बैटल ऑफ मिडफील्ड, आई एक्सपेक्ट बार्सिलोना टू बी ऑन टॉप, क्योंकि पेड्री है एंड इफ डे जॉन्ग स्टार्ट्स, व्हिच इज हाईली प्रोबेबल एज वेल. तो मेरे को लगता है बार्सिलोना इज गोइंग टू हैव दैट एज एज वेल.
सेकंड बिग वीकनेस दैट आई फील मैड्रिड की जो है इज द लैक ऑफ प्रेसिंग एंड्योरेंस. आई थिंक लास्ट सीजन हम बिल्कुल प्रेसिंग नहीं करते थे अंडर एंचेलोटी. इस सीजन चैबी वांट्स द होल टीम टू प्रेस. तो उस केस में वो थोड़ा सा ना लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन दिखता है कि कुछ प्लेयर्स को लगता है कि अभी प्रेसिंग करना है, कुछ प्लेयर्स को लगता है नहीं नहीं करना है. तो यू आर काइंड ऑफ लाइक इन अ बैड स्पॉट, है ना इधर के ना उधर के. तो और वो आई थिंक आफ्टर 70-75 मिनट्स थोड़ा लैक ऑफ इंटेंसिटी भी दिखता है इन प्रेसिंग. इफ आई टॉक अबाउट स्ट्रेंथ्स, आई थिंक Madrid ka attack is doing well. Vinicius has found his form, which is like a big ceiling raiser for the whole team. Last Juventus वाला goal भी I think Vinicius ने ही बनाया था, and he's becoming a little more mature, I feel. Mbappe Arda connection is kind of like a cheat code for us, so that facet of attack is also doing well. बेलिंगम ने भी थोड़ा-थोड़ा रीसेंट मैचेस में अपनी फॉर्म एंड फिटनेस थोड़ा-थोड़ा अपना मोजो फाइंड करना शुरू कर दिया है. तो आई थिंक इन अटैक वी आर डूइंग गुड. मिडफील्ड में आई थिंक अ लॉट ऑफ वर्क स्टिल हैज टू बी डन. नाउ बिल्डिंग ऑन द वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स, let us try to do something. So I think there are a lot of question marks on what lineup Flick is going to use and करेक्ट, what lineup Chabi is going to use. So करेक्ट. let us try to build lineups for both. जो हमें लगता है स्टार्ट करना चाहिए और जो करने वाला है. ठीक है. So goalkeeper, I think we can start with Chesney. Garcia is out. Plus, even if he comes in, I don't think पहले match Clásico you start him, right? So Hmm. let's start with Chesney. Defense, I think I'm pretty clear. Kunde as right back, Balde as left back, Kubarsi definitely starts. Just on the basis of form, you can say you might want to start Eric Garcia, but I don't think Eric Garcia is going to start. I think this match needs a no nonsense defending. I will use Araujo in this match. I think उसको रेस्ट, आई थिंक लास्ट मैच में रेस्ट भी उसको इसीलिए ही किया था टू I don't कम think अप rest अगेंस्ट. पर a factor चल रहा है Araujo का. He is very much alternating between Araujo, Christensen and Balde. He's using them all along. In fact, Eric Garcia. But इस match में you want no nonsense defending against Mbappe. So I think Araujo goes there very easily. हाँ, और मुझे लगता है Uh, कुबारसी इज गोइंग टू बी द लेफ्ट वन एंड अराओ इज गोइंग टू बी द Araujo, राइट correct, वन, स्पेशली correct, अगेंस्ट विनी ऑन द राइट, है ना, ऑन द लेफ्ट correct, फॉर मैड्रिड. correct, correct. यहाँ पे फिर मैं डाल Pedri, देता हूँ कसाडो, डाल देता हूँ कसाडो और De सोच Jong की. ले यहाँ पे कौन आएगा. इवन इफ अगर हम वर्ल्ड 11 बना रहे होंगे ना, ये पोजीशन फिक्स्ड होगी आई गेस. मे बी विटीनिया, बट लेट्स सी. आई हार्डली डाउट दैट. लेट्स De Jong स्टार्ट. should I put? अभी वो मेरे को लगता है आई थिंक he'll be able to make it for the match. हाँ, आई थिंक वरना बहुत स्ट्रांग आ जाते अब तक. देयर वाज Hmm. सम डाउट बट आई थिंक De Jong will still feature in. Cam will be Fermin Lopez for sure. Number 10 is Fermin Firing, Lopez. firing Fermin. Firing for firing Fermin. वो अब डैनी ओल्मो के वापस आने के बाद भी आई एम हाईली हाँ, कॉन्फिडेंट इट विल बी फर्मिन हैट्रिक फॉर मारा लॉन्ग लास्ट टाइम. मैच. करेक्ट, करेक्ट. Okay, left, the Rashi, Manchester United prodigy. rampant Rashford. Right wing, whom do you want to see other than Yamal. Lamine Yamal? Okay, an attack will be. I think you have to go with Ferran Torres. He will be back, Hmm. and you'll go with a pure play striker there. अभी तो Ferran. इंजरीज की बात कर रहा था. इवन विद द इंजरीज दिस लुक्स लाइक अ वेरी डेंजरस लाइनअप. यार हाँ, अब मतलब if you see Ferran here, right, then it doesn't suddenly. But Okay, still, on let's paper, this looks like a very dangerous side that can hurt Madrid. for sure. That's our intent. I think on Madrid, I think we are going to play 4-3-3. 4-2-3-1 नहीं खेलेंगे. Mhm. Courtois, I think goalkeeper is going to start. That is a no-brainer. World 11. हाँ, true. I think last match तो Juventus के against Correct. crazy saves किए हैं. I think Militao is a guaranteed starter, so I'll put Militao first. आई थिंक डीन हाउसन खेलेगा वैसे मुझे जहां तक लग रहा है. हाँ, I think so as well, क्योंकि परसों मैच है and he has joined team training करेक्ट, अभी से ही, so should करेक्ट. start, but I शुड don't स्टार्ट. expect him to play all 90 minutes. पॉसिबल, बट Hmm. स्टार्टर फॉर श्योर.
Same is the case for right back. So Trent Valverde. and Carvajal both have joined. Yeah, you won't start them in a Clasico. Valverde. हाँ, स्टार्ट नहीं करेंगे आई थिंक विल गो विद वर्ल्ड ओनली। एंड मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट मैच से काफ़ी सिमिलर ही होगा स्टार्टिंग 11। Correct. Xabi Alonso इज़ नॉट Correct. गोइंग टू मेक द सेम मिस्टेक जो एटलेटिको के अगेंस्ट हुई थी कि नया कुछ Correct. ट्राई करते हैं। आई एक्सपेक्ट चूमेनी जो इस सीज़न बहुत अच्छा कर रहा Arda है। Chumeni and Bellingham is my take. आई थिंक Not सो your एज़ take? वेल। नहीं, Oh, आई थिंक आर्डा इज़ गोइंग टू स्टार्ट एंड आई वांट आर्डा टू प्ले इन मिडफील्ड क्योंकि बिना आर्डा पीछे खेले हमारा बिल्डअप पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा। बेलिंगम इज़ Bellingham. गोइंग टू बी योर प्लेयर हू इज़ गोइंग टू बी दैट बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर जो पीछे Correct. डिफेंसिव में ड्यूटीज़ भी करने वाला है और ही इज़ गोइंग टू क्रैश द बॉक्स एज़ वेल। सो पहले लेट्स स्टार्ट विद द ऑब्वियस कौन? Who? गोंजालो गार्सिया। Please. Please उसे start कर दो. And his game, I think Vinny is going to start. I think he has had a good run of form going into this match. Yeah, last और match में Brahim start किया था Juventus के against, but he didn't have a great game necessarily. And मेरे को लगता है इस game में you would want someone who can have that pressing intensity क्योंकि a lot of the game you'd be chasing against Barcelona उनको possession मिलने वाली है. So a lot of pressing and chasing is going to be there. So for that reason, I think he will go for Franco. So I think this yeah, is what also Madrid's 11 looks like for me. damn. Look at that. Mbappe, Vinny, Bellingham. What a lineup. What a lineup. ठीक है, with lineup out of the way, I think the only thing that is left is what will be the final score line at Santiago Bernabeu for this match day. Anand, what are your thoughts at your home? How much would you assign? So I'll probably try to think of winning strategies for both. मुझे ऐसा लगता है Madrid अगर जीतेगा तो उनकी winning strategy would be more on absorbing pressure and hitting on the counter by exploiting weaknesses of Barcelona. एंड अगर बार्सिलोना जीतता है देन इट्स लाइक अ कंप्लीट राइट मतलब वो बिल्कुल पिछली बार की तरह कुछ हो सकता है तो आई थिंक ईदर ऑफ द टू पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आई एम स्लाइटली एजिंग टुवर्ड्स बार्सिलोना विनिंग इन अ हाई स्कोरिंग गेम मुझे ऐसा लग रहा है इट विल बी अ हाई स्कोरिंग मड्रिड इज गोइंग टू एक्सप्लॉइट वीकनेसेस वो होगा पिछले सीजन नहीं कर पाता इस बार करेंगे तो आई एम एक्सपेक्टिंग लाइक अ 3-4 scoreline in favor of Barcelona. It hurts, but I think थोड़ा ऐसा हो सकता है. I don't see this happening, honestly. Barcelona scoring four at this season's Bernabeu. I don't see that happening. I think this match may, given the form, given Barca's form, given Madrid's form, I would assign 3 goals to Madrid. It is going to be a close match. It will either be 3-1 to Madrid or it is going to be 3-2 to Madrid. So my sense is towards 3-2. Barca will score 2 goals, but I think Madrid will come out on top. It will be close contest unlike last year, and it will be 3-2 to Madrid. So one thing that we both agree on is Madrid scoring 3 goals. These were the predictions that Anand and I came up with, but we would like to hear from you. So drop in your predictions on the scoreline. We are definitely charged up for the upcoming weekend. So like the video if you like this El Clasico banter and do subscribe to the channel.